Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. In this video, we are going to do a question from heat transfer, and actually it involves the method of conduction. And this question is very good revision for if you are struggling with conduction in any way, because we are dealing with so many of the structures. Sphere, cylinder, rod, T-shaped this structure sort of. डन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक यू थ्रू द क्वेश्चन में क्या क्या रहा है. सो हमारे पास देखो लिस्ट वन है एंड लिस्ट टू है. बेसिकली वी हैव टू डू मैच द कॉलम. And in list one, we are given four objects: a spherical object, cylindrical object, rod object, and T-shaped rod system. Done it? In each case, PQRS, what else is given is, this is the sphere. Done it? And its inner core is at temperature 3 T naught, outer core is at temperature T naught, inner radii is R, outer is 3R, and then at any point P inside this sphere, which is at a distance 3R by 2, we have to calculate what will be the temperature. Similarly, for cylindrical object, inner temperature 3 T naught, outer T naught. Okay, this is also annular cylinder, inner radii R, outer one 3R, and then we have to calculate temperature at point P, which is basically at a distance 2R from the axis of cylinder. Again, for the rod thing, again this temperature is 3 T naught, and whole length is L at a point P, which is at a distance L by 3 from the 3T naught temperature end. We have to talk about what will be temperature at point P. ठीक है. उसी तरह से देखो टी स्ट्रक्चर में भी सेम चीज है. पी पॉइंट पे हमें टेम्परेचर निकालना है. डन है. सो हाउ वी कैन गो अराउंड इट. सबसे पहले देखो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलती हूँ. कंडक्शन मेथड में दिस इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स, राइट? एंड इन दिस मेथड द रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज dH by dt. This is written as what? Thermal conductivity of material, area of cross section through which heat is flowing, into temperature difference across the two, across the length, done है, divided by L, length along which heat is flowing. So अगर देखो ऐसे heat flow कर रहा है, then delta T is basically temperature difference across the length, means it is started from this point and it is reaching up to this point. So what is the temperature of this one and this one? So heat will always flow from high temperature to low temperature, right? Just like current flows from high potential to low potential. So here T1 has to be greater than T2 and potential difference is T1 minus T2. ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन वी कैन ऑलवेज डील विथ लाइक वी कैलकुलेट करंट. सो करंट को हम कैसे निकालते हैं? करंट हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो चलो मैं डेल्टा वी लिखती हूँ बाई रेजिस्टेंस. इन दोनों को आप कंपेयर करो. यहाँ पे डेल्टा वी की जगह डेल्टा टी है, एंड इफ यू राइट हियर एल बाई के इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम रेजिस्टेंस बुला सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? रो एल बाई ए. सो रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी. इसको अगर वन बाई सिग्मा लिख सकते हैं. So this can be written as L by sigma A. Sigma is conductivity. Here K is conductivity, right? And A is what? A is the area of cross section. Through which heat is flowing, and L is the length. So same thing, right? So यहाँ भी आप thermal flow, thermal current flow के लिए you can always calculate resistance, and this is L by KA. एंड रेजिस्टेंस पैरेलल एंड सीरीज आप वैसे ही डील करोगे जैसे अगर यहाँ पे ये रॉड है एंड देन देयर इज अनदर रॉड. सो दीज टू रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज वट एवर हीट करंट स्टार्टेड फ्लोइंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस T1 and T2 will flow through this portion also. So dH by dt through these two portions are going to be same, right? So we will say that these two conductors are in series. We can talk about R equivalent. डन है. सिमिलरली करंट में हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है दैट इफ करंट इज कमिंग टू अ point and or to a node, then whatever current is coming to the node, same amount of current will go out of the node because there is no accumulation of current. Then a similar thing we will apply here. And for class 11th student जिन्होंने किरचॉफ्स लॉ नहीं पढ़ा है, मैं उनको बता दूं कि अगर देखो सपोज कर लो तुम्हारे पास वाटर फ्लो सिस्टम है, ठीक है, और वाटर फ्लो कंटिन्यूअस है. कहने का मतलब आपने जितना पानी सप्लाई किया वो कहीं ठहर नहीं रहा है, इट इज सिंपली गोइंग आउट. ओके, सो एट दिस नोड वट एवर वाटर इज कमिंग आउट विल गो आउट along this trajectory, along this trajectory. ठीक है. सो 11th क्लास वाले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा होगा. सो यू कैन अप्लाई दैट हियर. वट एवर इज कमिंग हियर विल गो आउट लाइक दिस. देयर वोंट बी एनी accumulation of fluid, and here it is
thermal current. Okay, so you can say that if here thermal current rate of flow is dH1 by dt, and if here it is dH2 by dt, and here if here it is dH3 by dt, then you can clearly write dH1 by dt will be equal to this plus this. ओके, सो दिस आर द थिंग्स वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ। कंडक्शन में मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बता दूं। कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन आई मीन सपोज कर लो ये हम तुम्हारे पास रॉड है, एंड दिस वाज केप्ट इन एटमॉस्फेयर एट आई मीन एट रूम टेम्परेचर। सो जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस रॉड, राइट? बट व्हाट यू आर डूइंग, सडनली यू आर कीपिंग दिस एट 100 डिग्री। ठीक है, यू आर पुटिंग दिस एंड inside the burner, and this end you are keeping in refrigerator sort of, which is maintained at temperature 0 degree. So huge temperature difference it will observe at that point of time, and so current will start setting in, thermal current, right? लेकिन initially क्या होता है ना, देखो ये जो whatever this rod thing is, it is at certain temperature, right? इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री था, बट एज हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग, दिस टेम्परेचर 25 डिग्री विल start changing, done it? And each point's temperature will increase. Each point's temperature will increase, and until the steady state is reached, temperature pattern at each point is changing. It will change until that dH by dt will become constant. कहने का मतलब कि देखो dH by dt constant कब होगा? dH by dt constant तब होगा when heat is not getting eaten up by any point. और हीट अगर कोई भी पॉइंट खा नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट का टेम्परेचर अब स्टेबलाइज हो चुका है, डन है? सो स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, कि जैसे इनिशियली हर पॉइंट का टेम्परेचर 25 डिग्री था, बिकॉज ऑफ हीट फ्लो, आई मीन द पॉइंट विच इज क्लोजर टू 100 डिग्री विल बी एट हायर टेम्परेचर, एंड पॉइंट विच आर क्लोजर टू 0 डिग्री विल बी एट लोअर टेम्परेचर। सो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर टेम्परेचर प्रोफाइल सेटअप होगा, और वो प्रोफाइल इस तरह से सेटअप होगा कि डी एच बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेते हो, तो इसका टेम्परेचर T1 ले लो, इसका T2 ले लो। T1 माइनस T2 इस तरह से सेटअप होगा कि रेट रेट ऑफ हीट फ्लो बिकॉज ऑफ temperature difference 100 minus 0 divided by resistance will be same as because of T1 minus T2 divided by this resistance of this small part R dash। ठीक है, सो बेसिकली अगर तुम्हें कोई कंडक्शन में बोलता है कि हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या कांस्टेंट हो जाएगा, हर पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बट सेम नहीं होगा। ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, ये टाइम के साथ T1 ही रहेगा, दिस विल स्टे T2 विथ टाइम। ओके, बट दिस टू आर नॉट सेम, दे आर कांस्टेंट बट दे आर नॉट सेम। ओके, सो टेम्परेचर प्रोफाइल, इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं। टेम्परेचर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग along the length of rod, and this temperature gradient is written as dt by dx। ठीक है, so with this enough information now we can easily solve it। what we have to talk about, we have to talk about calculating temperature of this point P। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे because of temperature difference 3T naught T naught, let us calculate heat flow, and if we know that heat flow we can next calculate again heat flow because of temperature difference 3T naught and temperature at point T। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ ये ऐसा है, डन है? व्हाट विल हैपन, ये तो वैक्यूम रीजन है, यहाँ पे ये फर्स्ट सर्फेस है, दिस इज अनदर सर्फेस, एंड इन बिटवीन हीट इज फ्लोइंग, सो रेडियल हीट फ्लो इज हैपनिंग, राइट? एंड एज हीट विल फ्लो इन दिस रीजन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कांस्टेंट? जैसे हीट फ्लो का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, हीट फ्लो फॉर्मूला इज के ए डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, सो एक्चुअली इस फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करके आंसर आएगा या नहीं, या फिर देयर इज नीड ऑफ इंटीग्रेशन, दैट यू कैन डिसाइड बाय केयरफुली लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में तुम्हें ये देखना है कि लेंथ कैसे वेरी कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कांस्टेंट है? जनरली ये वाला जो चीज होता है ना, ये चेंज होता है तुम्हारा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? लेंथ तो ऑब्वियसली यू आर ट्रेवलिंग अलोंग लेंथ, धीरे धीरे लेंथ बढ़ रहा है, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, राइट? सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा हो, जैसे सपोज कर लो लीनियर रॉड ना लेकर ऐसा रॉड आपने ले लिया, तो आई मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच हीट इज फ्लोइंग इज चेंजिंग, सो डीएच बाई डी टी के लिए कांस्टेंट ए आप पुट नहीं कर सकते, राइट? सो इन दैट केस यू नीड द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, डन है? हियर ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग, I mean, heat started flowing from this cross section, right? And at any random point here, it is crossing this cross section. So basically A is changing, and if A is changing, this is a variable resistance case, right? So what we will do, let us calculate
रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल पोर्शन। सो स्मॉल पोर्शन का हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? सपोज कर लो हमारे पास ये एक ऐसा इनर है एंड दिस इज द पॉइंट, एंड इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन मैंने ये बनाया। लेट्स से इट्स थिकनेस इज डी आर, इसका थिकनेस मैंने ले लिया, इसका थिकनेस क्या है? डी आर है। So basically, at this point, current is flowing through how much length? Dr length it is flowing. And then we will be calculating resistance of this small portion. Okay. So what will be resistance of this portion? R का value, Dr क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे K D A delta. Okay, we are simply interested in calculating resistance. So temperature को भी रहने दो, divided by L. L क्या है? Dr. ठीक है, डी ए क्या लिखोगे आप? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इज ऑफ रेडियस आर, देन दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी के 4 pi r² बाई डी आर। ठीक है, इट इज it is something that you will be getting, right? Done it? So this will be the area through which current will be flowing. Okay, so this is this. अब आप देखो इसको सॉल्व करो। के डी ए हमने लिख लिया, डी आर लिख लिया। सो दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? सो वट एवर इज कॉन्स्टेंट टेक इट आउटसाइड, एंड दिस इज इक्वल टू, ओके मैंने ये एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं लिखा है ना, ये जो के डी ए बाई आर लिखा, दिस इज वन बाई रेजिस्टेंस बेसिकली। सो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। Let us now calculate resistance of this small portion. So resistance का formula क्या होता है? That is L by K, right? So dr, small resistance I am going to calculate. That will be, I mean for this portion. So for this area of cross section, current is flowing through what length? Dr length. So length is dr divided by k into area is how much? 4 pi r ka square. So this will become how much? Dr is equal to 1 by 4 pi k r by dr by r ka square. So if you have to calculate total resistance, what you will be doing? You will integrate it, right? And you will integrate it so that r will vary from 3r to this is how much? This is, sorry, this is r to 3r, right? So this is this. So for whole, we can calculate resistance, and this will be equal to how much? 1 upon 4 pi k, and dr by r square, I mean integration of dr by r square will be equal to how much? 1 by 4 pi k. So this will become minus of 1 by r. Okay? And then you put the limit. This is r and this is 3r. So if you put it 1 upon 4 pi k, अब देखो यहाँ पे we can write it like 1 by r will be bigger, नेगेटिव साइन को मैंने अंदर ले लिया, माइनस 1 by 3r, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन बाहर होता, this one you would have written like 1 by 3r minus 1 by r. So this is this. Okay, and this will become equal to how much? This will become equal to 2 divided by 4 pi k into 3r. This is the resistance thing. Okay. Now you can clearly calculate heat flow. So heat flow, I mean in this region is equal to how much? dH by dt. Okay. And that is equal to how much? Delta T, 3 T naught minus T naught divided by resistance. Resistance is how much? 2 by 4 pi k 3r. So 2 divided by 4 pi k 3r. Okay. This is, again we can calculate heat flow by taking this as the first point, this as the second point. Okay. So इसके लिए आप रेजिस्टेंस निकाल लो, इतने रीजन का रेजिस्टेंस क्या होगा। डन है। इतने रीजन का रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? रेडियस विल वेरी फ्रॉम r to 3r/2। तो चलो यहाँ पे फिर से आप लिमिट पुट कर दो, 1/4 pi k, this is minus 1/4 pi k, and this is 1 by r. Limit will vary from where to where? r to 3r/2। अगेन आप नेगेटिव साइन को अंदर ले लो, सो दिस विल बिकम 1 by r minus 2 by 3r. Okay, so this will become how much? This will become 1 by 3r. ठीक है, so 1 by 4 pi k 3r. So this dH by dt can also be written as temperature of this inner core 3T naught minus temperature at point P, that is T, divided by resistance of that portion. So that is 1 upon 4 pi k 3r. Done it? So this one we can write. इसको आप cancel कर लो. So you will be getting how much? 2T naught is equal to 6T naught minus 2T. Right?
सो दिस इज दिस। अब देखो यहाँ से 2t को आप क्या लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट एज 6t0 minus 2t0. So t is equal to how much? This is 4t0 by 2, and that will be how much? 2t0. So temperature of point P we have calculated. डन है, सिंपल है, ऐसे हम निकाल सकते हैं easily. Now let us talk about this annular cylinder. Again we will go through the same method. Whole cylinder का आप इस region का पूरे का resistance निकाल लो. So resistance is what? It is L by uh, this is L by KE, right? So resistance of a small portion का आप resistance कैसे निकाल सकते हो? जैसे suppose कर लो ये तुम्हारा bigger cylinder है and you are talking about, okay मैंने diagram बहुत ही ज़्यादा घटिया बनाया. So let us talk about this point, ठीक है? So at this point P, आई मीन आई एम जस्ट पी नहीं, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है? यहाँ से मैंने कोई भी एक रैंडम सिलेंडर बनाया, ठीक है? सो एज हीट इज फ्लोइंग, हीट विल फ्लो अलोंग व्हाट? Heat will flow radially in this direction because temperature difference is in this sense, right? This is maintained as 3T naught, this is T naught. So heat will flow in this case. And as heat is flowing in this direction, what is changing? Area. Because heat is flowing through the curved surface area, and gradually radius of that cylinder is changing, right? It is increasing. So curved surface area through which heat current will pass will actually gradually increase. So A is a variable. And done hai. So we cannot directly put the value of A and L and say R is this. No. We need to calculate resistance for a small portion, then we need to integrate it. तो small portion का आप निकाल लो. Suppose कर लो मैंने क्या लिया, मैंने एक सिलेंडर लिया जिसका रेडियस R है और जिसका थिकनेस क्या है dr. क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप स्मॉल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो उस स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए dl कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए. तो अगर मैंने R रेडियस का एक सिलेंडर लिया है, then we can say that for area of cross section, I mean for area, curved surface area 2 pi r l, uh, I mean this area will be constant for what length? For very small length, right? So for very small length dr, we can say that this a is a constant. Done? So that is why I am putting it here. dl को put करना जरूरी है, small dl, right? So dl को हमने क्या लिखा? dr divided by k da. dA आप पुट कर दो, dA will be equal to how much? 2 pi r l. Okay, so l is the length of this cylinder. यहाँ पे जो भी constant है उसको आप बाहर ले लो. K 2 pi k l. L will stay constant, right? Because this L length of cylinder, across L length of cylinder, always heat current is passing through. So this is this dr by 2 pi r. Integrating in order to calculate resistance. So integration limit for whole resistance will vary from R to 3R. ठीक है? So देखो यहाँ से 2 pi हटा दो, dr by r it is, right? So this is, sorry, this is dr by r. Now let us calculate it. 1 by 2 pi kl, ठीक है, and this is equal to ln r, done है, and it will vary from where to where? R to 3R. So this is basically equal to how much? ln 3. 1 by 2k pi l ln 3. So this is resistance of the whole part. What will be the resistance of which part of this part? I mean the cylinder starting from radius r and ending at radius 2r. What will be resistance of that part? So you will be writing resistance of that part as, let's call it R equivalent total, and R of the R up to P point will be equal to how much? 1 upon 2 pi KL into, I mean limit will change from where to where? ln R, limit will change from R to P point has a resistance of 2R, so R to 2R. So this will become 1 upon 2 pi KL ln 2. Done? So this is this. नाउ लेट अस कैलकुलेट द हीट करंट. अगर आप हीट करंट निकालते हो, टोटल रेजिस्टेंस लेकर अगर आप निकालते हो, दिस यू विल बी राइटिंग एज डेल्टा टी विच इज 3T naught minus T naught divided by this resistance. What is the value? 1 upon 2 pi k ln 3. So ln 3 divided by how much? 2 pi k. Also heat current we can calculate from this because of, I mean because of this portion, I mean taking this portion into consideration, right? So that will be equal to 3T naught minus T. Let's say temperature at point P is equal to how much? This, and this divided by ln 2 2 pi kl. Okay, so this will get cancelled and we are left with what? 2T naught by ln 3. And now in the question it was given that ln 3 you can approximate as what? So let us check for that.
ln3 1.1 and another 0.7. ठीक है, so ln3 को आप क्या लिख सकते हो 1.1 and this is equal to how much 3 t naught minus t divided by 0.7. So this will become how much 1.4 t naught. This is equal to 3.3 t naught minus 1.1 t. So this will become how much 1.4 यहाँ से लेकर जाओ. So this will be, I mean, 19, right? So this is your 1.9 T naught and this is equal to how much? 1.1 what? T, right? So point will get cancelled and T is equal to how much? 19 by 11 T, T naught. So this one we have got, right? And these two were more important क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन एंड ऑल करना था. अब तो हमारा क्वेश्चन इजी होने वाला है. देखो, अब इसके लिए हमें निकालना है. सो टोटल हीट फ्लो आप कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे हीट विल फ्लो at every point through same cross section, right? So A is constant throughout. Done. So we can we don't need to go with the integration thing. Resistance R equivalent अगर आपको लिखना है total length divided by K into area of cross section. ठीक है? So heat current if you have to write, you can write it like 3T naught minus T naught by resistance. This is L by K. ठीक है? So this is 2T naught by L by K. Now we know that under steady state because we are calculating everything under steady state because the formula that you know is true for steady state. ठीक है? So steady state की आप बात कर रहे हो तो heat flow यहाँ से यहाँ तक जो है वही यहाँ से यहाँ है एंड वही 3T नॉट से T नॉट तक है, राइट? सो अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए आप निकालते हो देन यू विल बी राइटिंग व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस एज 3T नॉट माइनस T डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस विल बी you will be taking for L by 3 length, right? So that will become how much? I mean L by 3Ka. ठीक है? And this heat flow will be same as this one, right? So 2 T naught divided by L by Ka. So L by Ka को आप cancel कर लो. This will become 3T naught minus T and this is 2T naught. ठीक है? So this is 9T naught minus 3T and this is equal to 2T naught. So this will become how much? 7T naught is equal to 3T and T is equal to how much? 7T naught by 3. Let us check ये वाला option है कि नहीं. 7T naught by 3. Yes, it is there. So we have got correct. Now let us talk about this one. And here we need to use that Kirchhoff's wala thing and that equation of continuity wala concept. So let us use that here. See, let's say P point has a temperature T. So whatever is heat flowing in this region will be how much? It will be equal. Let's say this is H1 and heat flowing. Let's say temperature at point P is less than 2T naught, is less than T naught. So heat will flow from 2T naught to P. Sorry, temperature at P I'm considering less than 3T naught it will be, yes. Temperature at P I'm considering less than 2T naught, yes. And temperature at P I'm considering greater than T naught. ठीक है? So P से हीट इधर की तरफ जाएगा. तो देखो P पॉइंट पे हीट दो हीट आ रहा है. This is let's say this is H2 and one heat is going away, that is your H3. So H1 plus H2 को आप क्या लिखने वाले हो? H3 लिखोगे. ठीक है? So H1 लिखने की कोशिश करो. H1 क्या होगा तुम्हारा? Temperature difference 3T naught minus T divided by how much? This will be L by Ka, right? So L by Ka. K is same for all the sections, okay? And area of cross section you can say, I mean same cross section का T shape structure है. So L by Ka. H2 को आप क्या लिखोगे? H2 will be written as again 2T naught minus T divided by how much? Divided by 2L by Ka. ठीक है? And what is this H3? This is equal to T minus T naught, ठीक है? Divided by how much? Divided by L by K. Now let us, we will be doing what? H1 plus H2 will be equal to what? H3. Let us do that here only. So अगर आप इसको लिखते हो तो क्या लिखोगे? देखो, this will be 3T naught minus T divided by L by Ka, ठीक है? And this plus 2T naught minus T divided by 2L by Ka, ठीक है? And this is equal to T minus T naught L by K. So L by K को आप कट कर लो. So this will get cut and then you are left with what? 3T naught minus T plus
टू टी नॉट बाई टू क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू हाउ मच, टी माइनस टी नॉट. सो थ्री टी नॉट प्लस टी नॉट, दिस इज फोर टी नॉट, और प्लस इधर का टी नॉट भी आएगा फाइव टी नॉट, एंड फाइव टी नॉट माइनस ऑफ थ्री टी बाई टू. ठीक है, फाइव टी नॉट माइनस थ्री टी बाई टू इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू टी. ओके, सो इसको आप इधर की तरफ लेकर जाओ, फाइव टी नॉट इज इक्वल टू थ्री टी बाई टू प्लस टी. सो दिस इज फाइव टी बाई टू. सो फाइव फाइव विल गेट कैंसल्ड एंड टी इज इक्वल टू टू टी नॉट. ठीक है, सो व्हाट आर द वैल्यूज वी हैव गॉट. चलो अब वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं. सो जहाँ तक मुझे याद है, फॉर दिस से जो जल्दी में निकाला है उसको पहले लिखते हैं. टू आया है हमारा आंसर, राइट. सो फॉर दिस वन इट इज दिस, एंड रॉड के लिए कितना आया हमारा, दैट वाज आई डोंट रिमेम्बर. मेरी मेमोरी बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाती हूँ. सो रॉड के लिए आया था सेवन टी नॉट बाई थ्री. ठीक है, सो चलो यहाँ पे मैच करते हैं. रॉड के लिए है सेवन टी नॉट बाई थ्री, एंड व्हाट इज फॉर दिस सिलिंड्रिकल थिंग, 19 था आई गेस. सो इट इज दिस वन, एंड स्फेरिकल के लिए भी हमें टू टी नॉट ही आया था. सो दिस इज दिस. अब देखो हमारे पास पी एंड एस का सेम ऑप्शन है, तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में पी एंड एस सेम है. सो ए एंड बी में सेम है. उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक कर लो, क्यू का क्या है, क्यू का है फाइव. ठीक है, एंड क्यू का थ्री है, नो क्यू का थ्री नहीं आया है, क्यू का फाइव आया है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, I hope you have got this question, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.